अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई चैनल मोमो आर्ट्स। कैसे आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो आज मेरी दादी मेरे लिए कलौंजी के बिस्किट्स बनाई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो चलें देखते हैं ये कैसे बनते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरी दादी है और आज मेरी दादी आपको बताएंगी कि कैसे कलौंजी के बिस्किट्स बनते हैं। ये 3 बाउल हमने मैदे के डाले हैं, एक, ये 2 और ये 3। ठीक है, ये हमने कलौंजी डाली है, इसके अंदर 1 चमची, आधी चमची हमने नमक डाला है इसके अंदर। ठीक है, ये चीनी हमने पानी के साथ बॉईल करनी है। ये हमने 1 गिलास पानी दिया है। ठीक है, और ये आधा कप चीनी है। ये हमने चूल्हे पे रखने हैं सीरा बनाने के लिए। और ये आधा कप हमने इसके अंदर ऑयल डालना है। इसको अच्छी तरीके से हाथों से मसलना है, हल करना है कि इसका घी थोड़ा सा अपने आटे से छूट जाएगा। Oh, never in my life did I want to see you more than this. And every time you're lost, I wonder if you know you're missed. I'm breathing when I can, and I only hope you're watching this. I hope you know that I exist. Mission control, do you read me? Send me my coordinates lately. Mission control, am I drifting? Tie me to someone who will love me. Yeah, I'm doing when I make you. I'm not the only one who's alone. Find me soon and take me home. I knew it when I saw you. I'm not the only one hanging on. Tie me to someone who will love me. तो देखिए ये रेडी है और बहुत मज़ेदार और यमी से बने हैं। और जब भी आप बनाएं इसे लो फ्लेम में बनाएं। और देखिए ये अंदर से भी कितने अच्छे लग रहे हैं। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।